Hello friends, welcome back to the best DLR set series by Team PrepZone. So far we have covered really good level of sets. Hope you're solving it. If guys this is your first set, kindly visit this playlist and try to complete all the previous sets that I have posted so far. And all those who want to get guidance from me, who want to get that sort of personalized attention about their preparation or anything with respect to any section, they can contact me on this number. There is a wholly special discount that is going on currently. So let's directly jump on to today's set, which is this set number 14. So this set says that, again, before reading the set, I request everyone to pause the video, see the set, this is the set, and these are the questions. You need to attempt it by yourself, comment your answers and time taken, share this video with your friends, and only then view my solution. Else you will not really learn anything new. ठीक है चलो. So in a dancing competition, 7 males and 7 females participated. ठीक है. Males और females participate कर रही. ठीक है. ये female है, ये male है. ठीक है. Organizer divided them into 7 group. Each group consisted of one male and one female. ठीक है. Male female का partner है. After the end of the program, each group was assigned a score. ठीक है. सबको score मिला group को, right? Which means one male, one female और score. इसका combination होगा. और these are the scores, and then we have certain information that is given to us and question पूछा है कि कौन सा correct pair है, which of the following is true, कौन किसका partner है, right? Which means I'll have to have the final table which has कि यार male कौन है, ठीक है, female कौन है and उसका score क्या है. ये combination मुझे चाहिए रहेगा. Male कौन कौन है, male is A to G are the male, right? Female कौन है, female is P to V, P से लेकर V तक female है, and scores क्या है इनके, K to Q के इनके scores है, right? ठीक है. तो मुझे टेबल बनानी है, राइट. एंड टोटल कितने लोग हैं, टोटल 7 लोग, राइट. विच मीन्स टेबल बनेगी 7 लोगों की. ठीक है. चलो ग्रेट. तो बना लेते हैं टेबल जल्दी से. ये टेबल बन गई हमारी. एंड थोड़ा सा नीटली बनाता हूँ मैं इस बार. 1 2 3 4. And because I have a total of 7 people, I'll have to have 7 cells in each column. 5, 6, and 7, right? These are 7. ठीक है. अभी let's use the information and complete the table. F's group got a score of L. ठीक है. F will be male. तो जो F का ग्रुप होगा, जो भी होगा, I don't know उसका स्कोर कितना आ रहा है, L आ रहा है. The score of B's group, I've used this information. ठीक है. The score of B's group was better than that of at least 3 groups. अच्छा. Also, this scoring is in the descending order of scores, right? Which means सबसे ज्यादा स्कोर K का है, फिर L का, फिर M, N, O, P, Q. सबसे कम स्कोर किसका होगा, Q का होगा, right? ठीक है. Now the score of B's group was better than that of at least 3 groups, which means B का जो भी ग्रुप है उसका स्कोर एटलीस्ट 3 लोगों से तो बेटर है. which means B का जो ग्रुप है उसका स्कोर क्या हो सकता है, 3 लोगों से तो बेटर है. which means it can be either K, L, M और N. and similarly score of C's group, जो C का ग्रुप है उसका जो ग्रुप है इसका स्कोर इज बेटर देन दैट ऑफ एटलीस्ट 4, which means it can be either K, L और M. I don't know कौन सा क्या है, वो मुझे नहीं पता, बट इन दोनों में से होगा, राइट. ऑफ कोर्स इट इज F का स्कोर L है तो L तो नहीं हो सकता, राइट. वो तो गिवन है. सो इट विल बी इधर KMN और KM. नाउ E's पार्टनर, आई यूज दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है. चलो. E's पार्टनर वाज T. E का पार्टनर कौन है, D है. ग्रेट, आई नो दिस. R's का पार्टनर इज नॉट D. ठीक है. R का पार्टनर D नहीं है, उतना मुझे गिवन है. ठीक है. लेट्स सी कौन है, विच मींस D, जो भी D होगा उसका पार्टनर बस R नहीं है. दिस इज गिवन टू. ठीक है. I've used this information. R's partner was not D. ठीक है. S group got score K. S is female, right? S का जो score है that is K. ठीक है. fair, right? And A was not the partner of U. ठीक है. A का partner U नहीं है. ठीक है. I've used this information as well. I've written down the score. The score of exactly one group was the same as the name of the member of that group, which means जो भी score possible है ना, ये सारे score, इसमें से एक score वो है that is same as the name of the member of that group. ठीक है. तो देखो, K किसी का नाम नहीं, L किसी का नाम नहीं, M नहीं है, N नहीं है. Only thing I can see is P and Q are the name of 2 females, right? Which means either P का score P है
या फिर Q का स्कोर Q है, ठीक है. This I've used. Sorry, this I've used. Now it's given to me that the score of Q's group and U's group were better than those of U's group and V's group respectively. Respectively का क्या मतलब होता है कि Q का जो ग्रुप है उसका स्कोर इज बेटर देन U, ठीक है, एंड U का जो ग्रुप है उसका स्कोर इज बेटर देन V, ठीक है. सो दिस इज गिवन टू मी कि Q का स्कोर इज ग्रेटर देन U एंड U का स्कोर इज ग्रेटर देन V, विच मीन्स सबसे लोवेस्ट स्कोर कौन सा है, सबसे लोवेस्ट स्कोर इज Q, ठीक है. ठीक है, तो यहां से सी हमने जो इंफॉर्मेशन यूज में लिया था, वी सेड कि द स्कोर ऑफ Q, either the score of Q is Q or the score of P is P, but the score of Q cannot be Q. Why? Because Q is the lowest score and Q cannot have the lowest score because Q का score has to be greater than U and V, which means ये वाली possibility चले गई. This implies P जो भी फीमेल है, P जो फीमेल है उसका स्कोर क्या होगा, P होगा, राइट. We've used this information as well. Great. चलो, and then Q is greater than U is greater than V, ठीक है. ठीक है, नाउ द स्कोर ऑफ B's ग्रुप वाज बेटर देन दैट ऑफ C. ओके, तो पहले हमने बोला था कि B का स्कोर कैन बी K M एंड N एंड C का स्कोर कैन बी K एंड M, बट अभी इट इज गिवन टू मी कि B का स्कोर इज बेटर देन दैट ऑफ C, व्हिच मींस B का स्कोर N नहीं हो सकता, राइट. एंड बिकॉज B का स्कोर इज बेटर देन दैट ऑफ C, तो B का स्कोर हैज टू बी K एंड C का स्कोर हैज टू बी N, राइट. तो जहां K का स्कोर है वहां मैं B लिख दूंगा और जो C है उसका स्कोर होगा M. अब C यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ स्कोर इज P, सो हियर आई विल पुट अ C एंड आई विल से कि इसका स्कोर विल बी M, लेट्स से, ठीक है. सो आई हैव यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन एज वेल, ठीक है. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. द स्कोर ऑफ A's ग्रुप वाज नीदर P नॉर Q, ठीक है. नाउ इट्स गिवन टू मी कि जो भी A है उसका ना तो P है ना Q है, व्हिच मींस A इधर नहीं आ सकता. इन तीन में A एनीवेज नहीं आया. लेट्स से दिस इज A, राइट, because A cannot be mapped to P as well, right? So they are saying कि A का score, the score of A's group was neither P nor Q, right? P नहीं हो सकता and Q भी नहीं हो सकता. So K चले गया, L is done, M is done, N हो सकता है, ठीक है, let's say N हुआ. O, O हो सकता है क्या? Yes, O is again a possibility. P हो नहीं सकता and Q हो नहीं सकता. So it can be either N or O, right? अभी I don't know कि क्या होगा. Fair. Then let's see what is the next information that is given to me. T's group did not get a score of O. T का जो है, T's group did not get a score of O, तो इसका स्कोर O नहीं मिला, ठीक है. सो K L M N मिल सकता है, O नहीं मिला है, ठीक है. P is done और Q मिल सकता है, सो इट्स either N और Q. I don't know, we'll figure out. Then R's group got the score Q, ठीक है. सो Q इधर कहीं होगा. R जो टीम है, आर इज अ फीमेल का टीम, उसका स्कोर इज क्यू. इफ इसका स्कोर इज क्यू, इसका स्कोर हैज टू बी एन, राइट. इफ इसका स्कोर इज एन, देन इसका स्कोर हैज टू बी ओ. ग्रेट, सो आई हैव फिल्ड ऑल द टेबल. अभी देखते हैं. See, it was given to me कि Q is greater than U is greater than V, right? तो the scores of L, M and O has to be filled. सबसे ज्यादा स्कोर किसका है? L का स्कोर है, right? So this will be Q. Then M का स्कोर है, so it will be U. And then O का स्कोर है, so it will be V because I've used this information. ठीक है, I've used this as well. Great. Now A cannot be mapped to U. A, अच्छा ठीक है, A तो already mapped हो गया, right? बचा D. Now D could not be mapped to R, which means D cannot be mapped here, so D will be mapped here. So A, B, C, D, E, F is done, so G will be mapped here. Wow, I have actually mapped the entire table within 3-4 minutes. Now let's jump out to the question. Which of the following is a correct pair? ठीक है. So R, B, P, D. ठीक है, P, D is a correct pair. So because it's an MCQ, I will mark B as my answer. Which of the following statements is or are true? P's group got the score P. Yes, that was true. P's group got the score P. Okay. Q's group got the score O. Q का जो ग्रुप था उसका स्कोर L आया, so no, only statement one is true. So I will mark answer as A. Who among these was the partner of C? C का partner was U. ठीक है, answer is B. Score O was assigned to which person's group? O का score was assigned to A or B. ठीक है, so it has to be none of these. Great, it was fairly simple, right? I was able to solve this question and I hope all of you guys are also able to solve this question, but do let me know in the comment section if you want this series to be continued. ठीक है, and in case you want any information from us, you can contact us on this number.
This is the reason why it should be prep zone. You can assume कि अगर इतना सारा content इस level का content you are getting it for free, what the enrolled students will be getting if they are a part of the batch. So don't think about ज़्यादा पैसा and economics. It's a very affordable course, but मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे हम लोग. So yeah, that's pretty much all the best, and I'll see you tomorrow with a new set.